Okay. So, hello students, I hope all of you are doing perfectly well. Please let me know in the comment section that whether you all can hear me properly or not. Please let me know in the comment section that whether you all can hear me properly or not. आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लो और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर पाए, so that they can also join the class. Okay, so students, as you all can see that here a fabulous offer is going on. So on the very special occasion of Makar Sankranti, as you all can see, the people who are taking preparation for CSIR NET and SET. So the whole course price is actually 39,999 for June examination. But that course is now available at a price of 14,732. 14,732. I'm repeating again that this price is the lowest price which is possible. And all you have to do to avail this offer is to use the promo code, which is of course my name, SOURAV. And of course, it's a limited time offer, only 14th to 16, means 14, 15, 16. 14th, 15, 16. This 3 days this offer will go on. So I'm repeating again and again that for all those students who are still thinking of joining a coaching institute for CSI NET examination and SET examination, of course, mostly CSI NET June 2024. So I think this is the best opportunity that you will ever have. Go for it. All you have to do is to use the promo code, which is my name, SOURAV. The offer is valid till tomorrow. So do hurry up, don't wait. Now moving on, in today's class, the first question is right now in front of you on the screen. So please just see it and let's start solving questions upon it. So let me tell you that what the first question says. The first question says the dispersion relation of electrons in a three-dimensional lattice in the tight binding approximation is given by Ek is equals to alpha cos kx into A plus beta cos ky into A plus gamma into cos kz into A, where A is the lattice constant, alpha, beta, gamma are the constants in dimension of energy. The effective mass tensor at the corner of the first billowing zone you have to find out. So basically, effective mass tensor is a very important thing, and I think most of you should know the formula. We know that the effective mass tensor is actually written, and as you can see, it's a 2 by 2 matrix, right? Sorry, it's a 3 by 3 matrix. So in the 3 by 3 matrix, if I do have to write down, so it should look like M11, first row, first column, first row, second column, first row, third column. Then M21, second row, first column, second row, second column, second row, third column. Then M, third row, first column, third row, second column, third row, and third column. So this is basically the effective mass tensor which we're looking forward to, and that's the M, effective mass tensor. Now over here, I can tell you that Mij, the component of the ith row and jth column, if you ask me, it should look like negative of h cut square divided by 2m. I'm sorry, 2m, it won't be 2m. It's basically h cut square divided by second partial differentiation with respect to ki and kj. Basically, you have to do it with E, the energy. So h cut square, this thing you can do, or we have a better notation for this. We can just write this thing as like this way.
We can just write this thing as this way also. Ki, kj. That you all can do. So this is the value of mij. Now, if you know this, you can find out each and every term in this matrix. First of all, let me tell you that what's your E. E is alpha cos kxa plus beta cos kya plus gamma cos kz. So E is equals to alpha cos kx into a, beta cos ky into a plus gamma cos kz into a. And if I do the differentiation with respect to, so first of all, I wish to tell that basically I'm gonna write kx as my k1, ky as my k2, and kz as my k3. Okay, so definitely the first m11 should definitely given as like second partial differentiation of u with respect to k1. So k1 means kx. So definitely if you differentiate this thing twice, you're gonna get cos kx into a to minus sin kxa, and from that you will get again cos kxa. But of course there will be an a square also. So this whole thing would actually become equal to, I want to tell you, alpha cos kxa plus beta cos ky a plus gamma cos kz. So this thing would become second partial. Okay, hang on. This thing would actually become h cut square divided by, okay, Jani is there, very good afternoon. So h cut square divided by, you have to differentiate E twice with respect to kx. First time I differentiate this thing, this and this will go to 0, it will give me minus sin kxa into a. Then minus a square cos kxa again. So minus alpha a square cos kxa. That's all I can say. So this is m11. Then again I can go for m12, which first time you will have to do the differentiation with respect to ky. Then you have to do the differentiation with respect to kx. Either if I do the differentiation with respect to ky, this and this will be 0, only this one survives. And then if I do the differentiation with respect to kx, of course this term will be 0. 1, 3, of course I have to do the differentiation with respect to kz, and then kx again will be 0. m21, first of all I have to do the differentiation with respect to kx, and then ky will be 0, of course, as usual. If I do the differentiation with respect to ky twice, it will probably give me h cut square divided by minus a square cos of ky into a. And then of course 0 over here, and here it is 0, 0. The last term would be h cut square divided by negative of a square into cos of, well, there must be some alpha, beta and gamma. So as I can say, it will be alpha, this one, here you need to have a beta, and here you need to have a gamma a square cos of kz into a. I think the matrix is just now ready in front of you. So once you know the matrix, it should be easy for you to just write down the values basically. It shouldn't be a tough job. Now tell me, what you gonna write? So they have said that you have to find out the value effective mass tensor in the corner of the first Brillouin zone. So corner of the first Brillouin zone means pi by a, pi by a, pi by a. So just put kx equals to, you have to put kx equals to ky equals to kz equals to pi by a. Right? All of these values are a. So you have to put kx, ky, kz equals to pi by a. Now if you put that thing in this equation, just put kx equals to pi by a. So it's cos pi means minus 1, cos pi minus 1, cos pi minus 1. So you're going to get h cut square by alpha a square, h cut square beta a square, h cut square gamma a square. So this thing should become equals to h cut square divided by alpha a square 0, 0, 0, h cut square by beta a square, and of course 0, 0, 0, h cut square divided by gamma a square. That's the matrix is. Now, if I take common h cut square by a square, of course, it's going to be 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. Can you see anything of this sort? 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma. Well, this is it. Option C is correct.
And this is a very important question which came in NET examination. Hang on. It's a very important question that came on NET examination. NET December 15. It came in NET December 15. And after this question is done, if you have no question, no doubt regarding this, we can definitely go to the next problem. And tell me what the next problem says. The next problem talks about this part. It says in a certain two-dimensional lattice, we are talking about a two-dimensional lattice over here. The energy dispersion relation of the electron is this. So E of k equals to this thing, where k denotes the wave vector, A is the lattice constant, T is the constant in units of electron volt. In this lattice, the effective mass tensor of the electrons calculated at the center of the Brillouin zone is equals to this. What's the value of alpha? So you have to find out the effective mass tensor at the center of the Brillouin zone. I'm saying nothing much. I think you can solve this problem by yourself. You're quite sufficient to do it. Please solve it. It's kind of the same. Basically, I can do it the first thing for you. So you see, it's a 2x2 matrix, right? It's a two-dimensional lattice, so it should be a 2x2 matrix. So the first one is M11, then M12, then M21, then M22, right? And of course, you know that Mij is equals to h squared divided by second partial differentiation of energy with respect to Ki and then Kj. Very good. So first one is M11, that is with respect to K1. The second partial differentiation with respect to Kx. I know the energy to be minus 2T minus twice of T cos kx into A plus, I forgot, 2 cos kxa by 2 cos root 3 by 2 ky a. 2 cos kxa by 2 into cos of root 3 by 2 ky a. That's my energies. Now if I do second partial differentiation of E with respect to kx, what would you get? So from the first one, I'm going to get, see, this is also cos, this is also cos, both of them will give you minus sign. So this minus sign will cancel out. I can simply write 2t, I can write a sine of kx into a plus, this one will remain unchanged, this one will actually become equals to 2 into a by 2, it simply will become equals to a sine kx into a by 2, and then cos of root 3 by 2 ky into a. This whole thing should be in a bracket. It's quite large term. Now particularly you can see, so this is the first one. Now if I do the differentiation again, you can see second partial differentiation of E with respect to kx will become equals to 2t, sine will again become equals to cos a square cos of kx into a, plus here you again get a square divided by 2 cos kx into a divided by 2, and this one would remain unchanged, cos of root 3 by 2 ky into a. If this part is clear, then please just write down at the Brillouin zone center, so at center of Brillouin zone, that means it's a 2D lattice, so kx equals to 0, that is actually equals to your ky. So ky kx equals to 0 at the center of the Brillouin zone. If you put kx and ky equal to 0, you're going to get this is 1, this is 1. So it's a square by 2, and this is 1, so a square. So a square plus a square by 2 means 3a square by 2. 2 to cancel out, so 3a square. So I'm going to get second partial differentiation of E with respect to kx square is 3a square into t. That's all I'm going to get. 3a square into t. Now what would happen? What would happen if I do the differentiation with respect to first ky and then kx?
So if I do the differentiation with respect to ky, this term will be 0. This term will survive. So if I do the differentiation, it will become sine of this thing, ky term. And then if I do the differentiation, it will become sine of this thing. Finally, at the center of the billion, if you put kx, ky 0, so both the terms sine 0 will give you 0. So definitely the second term, the first term of the matrix will be actually equals to, this is 3a squared t. So it's h cut square divided by 3a square into t. This term would be 0. This term would again be 0 because it's symmetric matrix. This is 0 means this is 0, and this term would again become equals to h cut square divided by 3a square into t. You can see this. You can first of all differentiate it with respect to y. This term is 0. This term will give you cos to sine, then sine to cos again. So in both the cases cos, you put 1, you will get 3. No doubt regarding that. Well, if you have a doubt, I can do it for you basically. Otherwise, it's just right. Just differentiate this thing 2 times with respect to ky and then put kx, ky equal to 0. And you will get your answer. So it should look like this. This is your effective mass tensor. Now you see in the question they have said the effective mass tensor should look like h cut square by ts square alpha 0 0 alpha. H cut square by 3 by ts square alpha 0 0 alpha. So from this we can say that alpha is actually equal to 1 by 3. So 1 by 3 means 0.33. So which one should be our answer? Tell me. This one should be 0.33. It's a question from GATE 2019. GATE 2019. It's a question from GATE 2019. Now, all the students, you can pay attention to this part that we can talk about a question which says that the energy dispersion relation for electrons in a 1D lattice with lattice parameter A is given by Ek is equals to E naught minus half W cos K, where W and E naught are constants. The effective mass of the electron near the bottom of the band. So you know the energy, and it's of course it's a 1D lattice. So just do the differentiation with respect to K. So dE dk is actually this thing will go 0, and this is cos, so it will become minus sign, so minus will take the minus sign. So half W into A sine of K. If I do the differentiation again, I'm gonna get d2E dk2. That should sign would again become equals to cos, so it's A square by 2 W cos of K to A, and therefore effective mass M is h cut square divided by d2E dk2. And of course, they say near the bottom of the band. So whenever this sort of things are there, like I don't know, like whenever they say that it's, you just have to do this for the bottom of the band. So in case of bottom of the band, you have to find out like what should be the value of K, what value of K you should use. So in that case, you can just at K equal to 0, you can write at the bottom of the band K equals to 0, near the bottom. So this thing will actually become equals to h cut square divided by, if I put this at K equal to 0, it will become a square W by 2, so 2 by a square into W. Okay, hang on. A square W by 2, so it will become equals to 2h cut square by 2h cut square by a square into W. 2h cut square by a square into W. Option A is correct. Near the bottom of the band, it has to be equals to 0. Fine. After that, I can tell you another question. Very good. Option A you said. जानी ने कहा ऑप्शन ए इज करेक्ट. वेरी गुड. इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन में देता हूँ, थोड़ा कर दो. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट इसको करो. ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो प्लीज. ये तेरा आया था नेट जून 17 में. नेट
जून 17 में आया था। बोला गया है द एनर्जी गैप एंड लैटिस कांस्टेंट ऑफ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। देखो एनर्जी गैप बोल दिया गया है, कितना बोला गया है 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहा गया है लैटिस कांस्टेंट that has been mentioned to be equals to 0.52 nanometer। तो भाई साहब एनर्जी गैप बोल दिया गया है, लैटिस कांस्टेंट बोल दिया गया है, ये किसका बोला गया इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। Now for simplicity take the dielectric constant of the material to be unity। dielectric constant मतलब एप्सिलॉन r, इसको 1 लिखने के लिए बोला गया है कि सिंपलिसिटी के लिए dielectric constant को 1 ले लो। When it is excited by broadband radiation and electron initially in the valence band, if excited by broadband radiation, then an electron initially at rest in the valence band, initially at rest in the valence band, at rest in the valence band, at k equal to 0 makes a transition to the conduction band, at k equal to 0 makes a transition to the conduction band. Now the wave vector of the electron in the conduction band, the wave vector of the electron in the conduction band the wave vector of the electron in the conduction band in terms of wave vector at the edge of the Brillouin zone, in terms of the wave vector of the wave vector k max at edge of Brillouin zone after transition। कितना होगा भाई, ऑप्शन ए में कहा गया है k max by 10, बी में कहा गया है k max by 100, सी में कहा जा रहा है k max by 1000 एंड डी में कहा जा रहा है 0। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन बताओ। तो बेसिकली सर यहाँ पे हमें वेव वेक्टर निकालना है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वेव वेक्टर क्या होता है बताओ, k जो है वेव वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा, ऐसे बता सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूले से k का वैल्यू निकाल लेना है। लैम्डा कहां से मिलेगा भाई लोग, जरा यहाँ पे देखो बोल दिया गया है इफ एन एक्साइटेड ब्रॉडबैंड रेडिएशन, एनर्जी क्या बोल दिया गया है, ये है लैटिस कांस्टेंट तुम्हारा, ये है, तुम्हें एनर्जी गैप पता है, लैटिस कांस्टेंट पता है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखो एनर्जी पता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई, अच्छा जरा एक बार देख, हमें पता है कि E इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज h इंटू c डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो यहां से लिख सकते हैं कि लैम्डा इज एक्चुअली इक्वल टू E डिवाइडेड बाई hc, ऐसा लिख सकते हैं।
वी कैन डू दिस, E डिवाइडेड बाई एच सी ऐसे कर सकते हैं। नाउ एच सी का वैल्यू अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो वो हो जाता है तुम्हारा 12400। एच सी का वैल्यू अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो वो तुम्हारा 12400। एच सी एच क्या होता है 6.626 into 10 to the power of minus 34, जितना आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 into 10 to the power of 8 जो भी आ रहा है डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power of minus 19, 12400। इसलिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग और चेंज करें थोड़ा सा, लाइक इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट इन एंगस्ट्रॉम तो इसको 10 to the power of 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो भी आ रहा है। तो हमें के का वैल्यू अगर लैम्डा का वैल्यू हमें एंगस्ट्रॉम में लिखना है, सो वी कैन जस्ट डू इट लाइक दैट। सो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दिया गया है, सी बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यूज हैं दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, राइट। अगर लैम्डा का वैल्यू जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि लैम्डा का वैल्यू हमने एंगस्ट्रॉम लिया था, लैम्डा इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाय 8 से हम लोग एंगस्ट्रॉम के उसमें कर लिए, इसको 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नीचे आएगा 10 की पावर -1, तो ये तुम्हारा 12400 इनटू एनर्जी कितना बोला गया है भाई, एनर्जी का है 1.875, तो 1.875, तो ये पूरा हम लोग निकाल रहे हैं एंगस्ट्रॉम में, तब जाके तेरा 12400 आता है। ठीक है, ये एक बार करके देखना। बेसिकली E3 का वैल्यू अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हो तो तुम्हारा आ जाएगा 1.2 into 10 to the power of और 400 लिख सकते हैं 1.24 to 10 to the power of -6, तो उसको अगर तुम एंगस्ट्रॉम में करोगे तो ही जाके ये आएगा। तो ये तुम्हारा की का वैल्यू है, एंड इफ यू जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन दिस वन वुड बिकम इक्वल्स टू क्या है 2 पाई 2 into 3.14 जितना आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 1.875 डिवाइडेड बाय 12400। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.5 into 10 to the power of -4 एंगस्ट्रॉम इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एज ऑफ द ब्रिलुइन जोन पे वेव वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, के एट एज ऑफ ब्रिलुइन जोन। भाई अगर एज की बात हो रहा है तो बेसिकली तुम्हें देखना है कि के एक्स के वाई के जेड करके एकदम एज में जाना है। तो बेसिकली अगर ब्रिलुइन जोन की बात मैं 2D में करूँ तो देखना कि यहाँ पे आते ये तुम्हारा पाई बाई ए है, ऊपर की तरफ पाई बाई ए है, तो ये एज का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा ये पाई बाई ए, ये पाई बाई ए, तो वो तुम्हारा आ जाता है रूट ओवर ऑफ पाई बाई ए का स्क्वायर प्लस पाई बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज रूट 2 into पाई बाई ए। बट जब 3D की बात कर रहे हो तब तुम्हारा एज मतलब के एक्स का वैल्यू भी पाई बाई है, के वाई का वैल्यू पाई बाई है, के जेड का वैल्यू पाई बाई है, तो के एक्स के वाई के जेड तीनों ही पाई बाई ए बन जाता है। तो देयरफॉर के का वैल्यू आता है रूट ओवर ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ जाता है रूट 3 into पाई बाई ए। तो ये वाला तुम्हारा आ जाता है रूट 3 into पाई बाई ए का वैल्यू अगर हम लोग लिखे यहाँ पे जस्ट बिकॉज हमारा ए का वैल्यू देखो नैनोमीटर में कहा गया 0.52 नैनोमीटर, राइट। 0.52 नैनोमीटर मतलब और एक मल्टीपल 5.2 एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाएगा रूट 3 into 3.14 रूट से मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 5.2 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी तुम्हारा आंसर आ जा रहा है 1.732 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 जो आ रहा है डिवाइडेड बाय 5 तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1.045 एंगस्ट्रॉम इनवर्स। अब उन लोगों ने क्या कहा है सर, उन लोगों ने कहा है कि
के का वैल्यू लिखना है के मैक्स के टर्म्स पे, तो के ई बाई के मैक्स लिखना है। तो के ई बाई के मैक्स अगर मैं करूं तो बेसिकली दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है, 9.5 into 10 to the power of minus 4 डिवाइडेड बाय 1.05। तो बेसिकली ये तुम्हारा आ रहा है 9.09 into 10 to the power of minus 4 which is approximately equals to 10 to the power of minus 3। अच्छा 10 to the power of minus 3 का मतलब क्या है? 1/1000। यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा 1/1000। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये नीट जून 17 क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। नीट जून 17 का क्वेश्चन है ये, एंड दिस क्वेश्चन वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोग एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो गेट 16 में आया था, देखो गेट 16 का एक क्वेश्चन है। गेट 16 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एनर्जी वेव वेक्टर E के रिलेशनशिप नियर द बॉटम ऑफ द बैंड ऑफ अ सॉलिड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज एनर्जी वेव वेक्टर रिलेशन। भाई मतलब E को K के फॉर्म में दिया गया है, A into K स्क्वायर प्लस B into K to the power of 4। अब जरा ये अगर हमें दिया गया है, अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। लैटिस कांस्टेंट कहा गया है 2.1 एंगस्ट्रॉम। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, यहाँ पे ए का और बी का वैल्यू कह दिया गया है। ए इज गिवन एज 6.3 into 10 to the power of minus 19 joule। B has been said 3.2 into 10 to the power of minus 20 joule। अच्छा, बोला गया है बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड में रेशियो ऑफ इफेक्टिव मास टू द इलेक्ट्रॉन मास, मतलब एम इफेक्टिव बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास के इलेक्ट्रॉन मास का रेशियो एट वेयर बॉटम ऑफ कंडक्शन, बॉटम ऑफ कंडक्शन। तो भाई साहब जरा यहाँ पे देखना कि अगर E कह दिया गया हो तो आप डी ई डी के का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आपका आ जाएगा 2 कैपिटल ए स्क्वायर इंटू के 4b a to the power of 4 into k cube। सेकेंड डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, d2e dk2। फिर से आ जाएगा आपका 4, हैंग ऑन, यहां से तो आई थिंक ये चला ही जाएगा। तो 2 कैपिटल ए स्क्वायर 2 कैपिटल ए इंटू ए स्क्वायर प्लस यहां से तुम्हारा आ जाएगा 12 b a to the power of 4 into k square। ये आ जाएगा। अब एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड ये हमारा 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 2 कैपिटल ए इंटू ए स्क्वायर। सही है। अब देयरफॉर इफेक्टिव मास क्या होगा भाई, एम इफेक्टिव एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर। अच्छा 1.054 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 का स्क्वायर। 2 इंटू ए का वैल्यू दिया गया था क्वेश्चन में क्या था, 6.3 टू द माइनस 19 जूल मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे जो तुम्हारा ए है स्मॉल ए 2.1 एंगस्ट्रॉम है, इसको लिखो 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10 स्क्वायर। ये कैलकुलेट करके देखना भाई क्या आ रहा है, 1054 into minus 34 स्क्वायर जो भी आ रहा है डिवाइडेड बाई 2 into
6.3 into 10 to the minus 19 divided by 2.1 into 10 to the minus 1 लगभग 98 minus 31 kg। तो भाई एम इफेक्टिव बाई एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, डिवाइडेड बाय 9.11 into 10 to the power minus 31, तुम्हारा जो है 0.218, दैट इज 0.22 क्या अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये तेरा आंसर क्या होगा। लोगों ने पूछा था एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड पे क्या वैल्यू होगा। बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड पे तो वैल्यू तुम्हें पता ही है, 0 होता है। और लोगों ने ये पूछा था कि इफेक्टिव मास एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड क्या होगा, एम इफेक्टिव बाय एम इलेक्ट्रॉन। तो ये तेरा आंसर आएगा 0.22, ये तेरा आंसर आएगा 0.22। तुम्हारा आंसर ये होगा इसका। इसके बाद एक क्वेश्चन टीआई फॉर 16 में आया था, वो भी इसी किस्म का ही है। कहा गया था कि डिस्पर्शन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। dispersion relation for electrons at conduction band of n-type semiconductor क्या हुआ है, a के स्क्वायर प्लस b, ये कहा गया है। It was observed that the cyclotron resonance frequency of the electron omega naught, जिसको हम कहते हैं cyclotron resonance frequency, ये तेरा आता है बेसिकली 1.8 into the power of 11 radian per second। per second when placed on a magnetic field B equals 0.1 watt per meter। बोला है A का वैल्यू क्या होगा, A व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, ये पूछा गया है। जरा देखो भाई साहब, अगर E का वैल्यू है तुम्हारा A के स्क्वायर प्लस B, तो डी के आता है 2ak प्लस 2ak एंड D2 आता है तुम्हारा 2a सिंपली। तो इफेक्टिव मास इफेक्टिव तुम्हारा आता है h² बाई D2e dk2, जो आया तुम्हारा h² डिवाइडेड बाई 2a, ये आ जाएगा। अब ओमेगा नॉट जिसको हम साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है EB बाई M, इसको M इफेक्टिव भी कह सकते हो, EB बाई M इफेक्टिव। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, EB by M effective, you know this, right? So it is E into B divided by M effective, so EB into 2A by H square। अब यहाँ से हम लोगों ने बोले A का वैल्यू निकालने के लिए, so A is equals to omega naught H square divided by 2E into B, omega naught H square divided by 2EB। ओमेगा नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, H का स्क्वायर का वैल्यू तुम्हें पता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁹, B का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, तो B है तेरा 0.1, ओमेगा नॉट को 1.8 × 10⁻11, (1.054 × 10⁻34
square by 2 into 0.1 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. Yes, ये करके देखना लगभग 6.2 into 10 to the power of minus 38 के करीब अप्रॉक्स तेरा आंसर है। यही तुम्हारा एक का वैल्यू जो एक्चुअल ऑप्शंस में दिया गया था TI-4 में 10 to the power of minus 36, 10 to the power of minus 28, 10 to the power of minus 32, 10 to the power of minus 38. ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक ही रखता हूँ मैं क्योंकि इसके बाद मेरा एक क्लास है, सो यहाँ तक ही रखता हूँ। And of course, if you people need this PDF, then this PDF of this class is available in my Telegram channel, which is Sourav Sir Testbook. तो मैं सिर्फ Telegram में जाना है and you will write SOURAVSIRTESTBW Sourav Sir Testbook. तो वहाँ पे जाके तुम लोग सर्च कर सकते हो and you will get the daily to daily PDF of the classes. And after that, you can also visit to our YouTube channel for various other lectures, if I may say. Just hang on for a moment. Okay. ठीक है, यहाँ पे I think some technical issues has been happened because of which the page is I'm unable to show the page. But basically आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग हमारे जो YouTube channel है वहाँ पे जा सकते हो and जाके you can search the CSIR NET Math and Physical Science Testbook Supercoaching। मैं बता देता हूँ यहाँ पे तुम लोगों को, तुम लोग CSIR जो हमारा चैनल है वहाँ पे जा सकते हैं, जाके तुम लोग सर्च कर सकते हो that CSIR NET, hang on, Supercoaching CSIR NET Math and Physical Science. If you search it, you will get the YouTube channel where you can see all the video lectures available. Okay, so for today I'm taking a bye and we will again meet tomorrow with more questions and more PYQs. Okay, basically गेट का एग्जाम सामने है तो मैं तो कहूँगा सिर्फ और सिर्फ PYQ पे ध्यान दे और कुछ मत कर, सिर्फ और सिर्फ PYQ पे ध्यान दे और फॉर्मूलास तैयार करो एटलीस्ट, क्योंकि आधे से ज्यादा इंडिया इसके ऊपर ही जी रहा है। तो वही करके जो बाहर से जो आएगा वो तो कंपटीशन से बाहर होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ज्यादा थ्योरी की तरफ पीछे मत भागो, जितना हुआ है उसको ही फिर से देख ले जाओ बार 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 बार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई एम टेकिंग बाय।